MBBS की पढ़ाई के लिए विदेश जाने से पहले ज़्यादातर छात्रों और उनके माता-पिता के मन में कुछ आम सवाल होते हैं। वहाँ की पढ़ाई कैसी है? क्या वाकई में पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है? क्या हम टीचर्स की इंग्लिश समझ पाएंगे? ऐसे कई सवाल होते हैं जो मन में डर और उलझन पैदा कर देते हैं। ओमकार मेडिकॉम में हम आपकी इन सभी चिंताओं को समझते हैं और आपको सच्चाई दिखाना ही हमारा उद्देश्य है। पिछले 15 वर्षों में हमने खुद जाकर रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया और 12 अन्य देशों की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की गुणवत्ता, क्लासरूम सुविधा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, टीचर्स की लगन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेशी छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया है। और इस अनुभव के आधार पर हम पूरे अधिकार के साथ कह सकते हैं, MBBS की पढ़ाई के मामले में चाइना सबसे आगे है। जो स्तर चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है, वह बाकी देशों में उसका 50% भी नहीं मिलता। और ये बात हर एक चाइना का यूनिवर्सिटी पर लागू होती है, चाहे हम उसके पार्टनर हों या नहीं। आपके सभी सवालों के जवाब और हकीकत दिखाने के लिए हम एक 4 वीडियो की खास सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, जो आपकी आंखें खोल देगी और आत्मविश्वास बढ़ाएगी। हम उन सभी छात्रों का दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, ताकि भविष्य के छात्रों का रास्ता आसान हो सके। There is obturator artery, internal pudendal artery as well. Obturator artery and internal pudendal artery. Obturator artery is going to provide at the medial compartment of the thigh. Okay, and internal pudendal artery is actually going towards the this one, towards the what we say is to the perineum level. Okay, but there is also superior gluteal artery and inferior gluteal artery. They are actually providing to the gluteal region. Alright, but after that, whatever vascular supply is there, that will be from femoral artery. Okay, from the femoral artery. Now let us see. Femoral artery just starts at the level of ending of the inguinal ligament, means inferior border of the inguinal ligament, right? Because inguinal ligament is the base of the femoral triangle. Okay, so we can see here. At the level of femoral triangle, this one is the femoral triangle. Femoral artery starts from the external iliac artery and comes to the femoral triangle. Then, at the level of femoral triangle itself, because there are so many questions have been asked already. Okay, this about this. Please remember, get this here. Okay, please have this. So here, at the level of femoral triangle, this femoral artery gives you 4 branches. So, at the level of femoral triangle, femoral artery gives you 4 branches, and one is superficial circumflex iliac artery. This is covered by thick connective tissue. That is known as fibrous. This is fibrous, pericardium. After that, there is visceral pericardium, which is covering the heart, and outer wall is known as simply pericardium. Very good. Pericardium. And inner one is known as epicardium. Epicardium. Right? And you know that heart is having 4 chambers. Isn't it? Heart is having 4 chambers. 4 chambers. So, right atrium and left atrium, Right ventricle, left ventricle. left ventricle, right? These 4 chambers are connected with the valve canal, you know. Thank you for watching our video. Kindly like, share, comment and subscribe. We upload new videos of different universities every week. See you in our next video.